Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video about Nifty, what you have to look at, how you have to combine the strategies. और पहले तो बात करते हैं आज के ट्वीट की. सो वी एक्सपेक्टेड 26,020 अगर ब्रेक होगा तो वहां से मोमेंटम बनना चाहिए एटलीस्ट 80-90 पॉइंट्स का मूवमेंट. बट फॉल्स हुआ एंड प्राइस रिवर्स हुआ शार्पली नीचे. 25,820 का सपोर्ट था. इट वेंट टुवर्ड्स 25,810 and then traded in a range. That's how the range bound movement happens. It's tricky, it's not easy and it traps. तो जब भी अगर लॉस हो रहा है तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि छोटा लॉस करना है और जब बना रहे तो ज्यादा बनाना है. दैट इज द मंत्र दैट यू हैव टू फॉलो. Also, if you look at, there is a lot of activity happening on the option side, and that's very, very interesting. I've been looking at the option chart, IVs, especially the IVs, implied volatility of next week is showing tremendous movement on the upside and the downside. तो अगर आप options में trade करते हो, it's very crucial for you to start looking at the implied volatility, and only if you look at the implied volatility यू विल बी एबल टू ट्रेड ऑप्शंस करेक्टली. नहीं तो होगा कि आपके फेवर में जाएगा तो भी नुकसान होगा क्योंकि आईवीज बढ़ रहे और कम हो रहे. मैं वो चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ और बहुत ही क्विकली दिखाता हूँ ऑप्शंस के आईवी के बारे में. और यहाँ पर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अक्रॉस माय स्ट्राइक प्राइस विच इज गोइंग टू बी से जस्ट आउट ऑफ द मनी मे बी 25,400 का स्ट्राइक प्राइस मैं सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट चार्ट. And it's crazy movement in the IVs. So if you look at this, the implied volatility shorted up in the morning by 9:35 at around 14. Okay, that's where the implied volatility was 14, and then it crashed down to the level of 11.5. मतलब 2.5 पॉइंट्स का मूवमेंट, परसेंटेज का मूवमेंट आईवीज में, मतलब implied volatility में. This strike price, which is deep OTM strike price of next week expiry, actually moved by nearly around 6 to 10 rupees just because of the IV crash. And that's how the options are behaving now again. Just because the IV starts moving, the option volatility will increase, giving you opportunity if you are on the right side of the trend. If you are on the wrong side of the trend, taking away all the money that you're making. So keep that in mind. Let's go on the Nifty chart. निफ्टी चार्ट पे बहुत ही सिंपल वे से अगर मैं देखूं, इट yesterday it closed above prior candle high, keeping the tone on the buy side. Today it formed a big volatility on the upside 26,040, downside 25,810, traded in a range, formed a doji. This is indecisive movement, looks like a range. Overall we are in a range in a sideways market, and that's how it's looking like. If I look at the hourly chart, very, very clearly, you can see it on the hourly chart. The markets have not done anything. So making money in this trendless market is going to be difficult unless you scalp, buying near the support and selling near the resistance. In sideways market, the best strategy to work is Bollinger Bands because market is not trending. यहाँ पर trend नहीं है. And KST indicator already slowing down the momentum, और इसलिए मॉर्निंग में ट्वीट में मेंशन भी किया था KST स्लो डाउन हो रहा है तो बुल कॉल स्प्रेड बनाओ या पुट बेच के पैसा बनाओ बिकॉज मोमेंटम नहीं है. फ्रॉम अ नियो वेव पर्सपेक्टिव, इफ आई एम लुकिंग एट इट, the entire movement looks to be in sync with this wave B. So this wave B is here and we are in wave F. So E complete हो गया यहाँ ऊपर and we are in wave F, possibly wave F. This wave F will be similar to B, मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, टाइम कंज्यूम करेगा, and that's how the behavior so far looks like. यहां पर कल के लिए स्ट्रेटेजी क्या करनी है हमें एज ऑफ नाउ फॉर टुमारो. इफ आई वांट टू बेट ऑन अ पोजिशनल स्ट्रेटेजी देन आई विल यूज, आई लुक एट केएसटी वेरी क्लोजली. 26,060 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो विल गिव अ वेरी क्लासिक बाइंग अपॉर्चुनिटी 26,050 60 के आसपास. बट वी शुड सस्टेन दैट्स इंपॉर्टेंट and we should resume the up move. वो नहीं किया, break below the low of 25,800, again might come down. So in a nutshell, it's a range as of now, 26,050 and 25,800. That's the range. And maybe we might scalp on the downside if it breaks that low. थोड़ा सा opportunity मिल जाएगा, maybe 70-80 points on the downside basis of that. So we are keep a watch on this. And as I said, the KST has been deteriorating, which means
there is no momentum in the market as of now, and that's good. After such a sharp move, इतना मूव आने के बाद में दोस्तों साइडवेज मूवमेंट होना अच्छा है। तो ये था वीडियो और ये थी कल की स्ट्रैटेजी। मॉर्निंग ट्वीट मैं करते रहूंगा। अगर ये शॉर्ट वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड कंफर्म बैक टू मी, सो आई कीप मेकिंग दी शॉर्ट वीडियोस एंड मे बी मोर शॉर्टर। एंड साथ ही में डू नॉट फॉरगेट टू रीट्वीट इट अक्रॉस एंड पुट डाउन योर कमेंट्स if these videos are helping you. Thank you very much. Ashish Kyal signing off.